हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बेसिक और बिगिनर फ्रेंडली ऑप्शन स्ट्रेटजी विच इज कॉल्ड एज लॉन्ग कॉल, राइट। और आप इसको सिंपल भाषा में आप एक कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं। ओके, नाउ ये स्ट्रेटजी कब लेनी चाहिए, राइट। तो पहली चीज, बिफोर यू टेक दिस स्ट्रेटजी, योर व्यू शुड बी बुलिश ऑन द मार्केट. So you should be, so let's say if you are taking this strategy in Nifty or Bank Nifty, आपका जो व्यू है वो बुलिश होना चाहिए, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी बढ़ेगा. ओके, बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्ट्रेटजी इज इसमें आपका रिस्क लिमिटेड है. जैसे अगर आप ये ग्राफ देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे नीचे इस एग्जांपल में योर रिस्क इज लिमिटेड टू $200. मार्केट जितना मर्जी गिर जाए, आप $200 से ज्यादा लूज नहीं करेंगे. ओके, एंड योर रिवॉर्ड इज अनलिमिटेड. मार्केट जितना मर्जी बढ़ जाए, उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा. इसको थोड़ा हम और समझेंगे जब मैं आपको एक एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा. आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम. अब मान लीजिए ये 102 है, आपने मान लीजिए 102 के स्ट्राइक लेवल की कॉल खरीदी और आपने कुछ पैसा दिया टू एंटर इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट. सो आपका जो ब्रेक इवन रहेगा, दिस अमाउंट, whatever is being shown in this color, get one second. Yeah, so your break even will be this amount, whatever you have paid in order to enter into a contract, plus the strike price, right. उसके ऊपर एक बार मार्केट अगर आपका चला गया तो पूरा आपका प्रॉफिट है. Now let's understand this more by means of an example. Let's say आप बैंक निफ्टी पे बुलिश हैं, right? So बैंक निफ्टी, okay, it's an index. बैंक निफ्टी पे बुलिश हैं. बैंक निफ्टी का आप 53,000 का कॉल खरीदते हैं. ओके, इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए आपको 799 रुपीज देने पड़ेंगे. ओके, लॉट साइज आपका 15 का है, विच इज मतलब 15. So total amount which you have to pay in order to get into this contract is लगभग 12,000 रुपए. To be precise, 11,985. That is the amount which you need to pay in order to get into this contract. Now, जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया ब्रेक इवन का, सो ब्रेक इवन का आपको मैंने बताया, ब्रेक इवन विल हैपन वंस, ब्रेक इवन विल बी स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम. स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे आपने चूज किया था 53,000 का. ओके, premium paid is 799. So your break even point in this case will be 53799. I think this is pretty clear. Okay, now let's say on expiry, bank nifty closes at 56,000. Okay, 56k. You will make a cool profit of 33015 on expiry. Okay, so आपने डाला लगभग 12,000 रुपए, and it's in less than a month. Let's say if it's a monthly expiry, the example what I have taken is for a monthly expiry. So less than a month, your money triples, close to triples, right? But there is a downside to it. Let's say market did not reach 56,000, market went down to 45k. Okay, in this case your loss is limited to only the premium paid, which is 11,985, right? So hope you have understood bit about long call option. If you have any comments, please share with us and we'll try to answer as much as possible. Do like and subscribe to our channel, and we'll bring in more such interesting contents for you. Thank you very much.